Here is internationally renowned and has a distinct flavor and tradition unique to Himachal Pradesh. Spectators, especially those from Himachal Pradesh, delighted by this tableau. And this is the tableau from Madhya Pradesh, which depicts the Madhya Pradesh Tribal Museum, which gives us a wonderful insight into the world of the various tribes of the state. On display are their art and culture and their traditions and their rich foot-tapping music. Some of the tribes included here are the Rajwar, Saharia, Gond, Bhil and Bharia tribes. One does feel like dancing along with that. And this is the tableau from Goa, which depicts the extensive seashores and the rich biodiversity of the state. Mr. Frog, perched on a rock, playing the guitar, is the mascot of Goa's Save the Frog campaign. And the ever popular music of Goa. The majestic church of Our Lady of Immaculate Conception in Panjim is known for its Portuguese Baroque architecture, which is on the rear of the tableau. Its famous zigzag staircase is seen in many films. विशाल भारत की संस्कृति का इंद्रधनुष राजपथ पर अपनी छटा बिखेरता हुआ ओडिशा की झांकी में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ भगवान लिंगराज की भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों रूप में पूजा की जाती है। शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय नमो शिवाय। Showcasing the beauty of living root bridge is the tableau of the state of Meghalaya, the adorn of the clouds called Scotland of the East. और अब मेघालय की झांकी। मेघ यानी बादलों का घर मेघालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। यहाँ की खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रबर के वृक्षों की जड़ों से पुल बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। The beautiful tableau from Meghalaya being applauded, and close behind the tableau from Gujarat, Rani Ki Bao, the Jal Mandir, a unique piece of ancient Indian architecture, the only stepwell declared as a World Heritage Site by UNESCO.
intricately done, the tableau from Gujarat. Artists were performing the characters of Panihari. And now the tableau from Andhra Pradesh. Brahmotsavam, life, art and culture of Andhra Pradesh. ब्रह्मोत्सवं हरि ब्रह्मोत्सवं वैकुण्ठनादुनी दिव्योत्सवं सप्तगिरिधाम्निके घनमुत्सवं सुरनरुलगे 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन जिसे आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश की ये झांकी, प्रदेश की सांस्कृतिक कला और धार्मिक पर्यटन को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी में कथक नृत्य करते कलाकार झांकी को जीवंत स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। Now from Karnataka, Anubhava Mandapa, the first socio-religious parliament of human history. The tableau of the state of Karnataka depicts the philosophy of Bhattacharya. उपस्थित जनसमूह आनंद लेता हुआ इस समारोह का कर्नाटक की झांकी सलामी मंच के सामने मानव इतिहास में पहली धार्मिक सामाजिक संसद अनुभव मंतपा पर आधारित। ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲತ್ತಾಗಿದ ಮಿಟ್ಟೆಯಂತ ಪರಯ್ಯ From the Union Territory of Jammu and Kashmir back to village. The Jammu and Kashmir government's Back to Village program, which started last year, is getting a massive response, especially from the people in the militancy-infested areas. The aim is to bridge the gap between the achievable and achieved goals in development, take governance to doorsteps of the rural and inaccessible areas, and generate credible and empirical feedback. This is the theme of the tableau of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Everyone in the audience loving these tableaus. They're all looking closely. Punjab showcasing the 550th birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji's message, there is one God, and three principles propounded by him: Kirat Karo, Naam Japo, and Vand Chako. The Gurdwara, an inspiration and a strong pillar of support to mankind. नाम जपा के वंड छकाया बाबे नानक ने बाबे नानक ने बाबे नानक ने सतनाम 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 Tableau from Punjab. We have tableau of Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Designed on Guru Nanak Dev Ji's universal message of universal oneness and
Do you have an idea for a startup and don't know what to do about it? Well, the tableau of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade is meant for you. The theme is Startups in India, Reach for the Sky. It showcases various stages of the life cycle of a startup and the all-round support given by the Government of India. ना डर चाहे हो आंधियाँ जुनून ये पार ले, तूफानों से मजबूत ये जिद तू अब ठान ले, रास्ते अब साथ हैं मंजिलें ये है मेरे, जोश दिल में है भरा छूना है। Now we have Tableau of Department of Financial Services. All you really need is that one winning idea. Area of financial inclusion in the country. And this is the tableau of the Department of Financial Services. It depicts the various achievements made in the area of financial inclusion in the country. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and other schemes for the ease of accessibility of cost-effective digital payments for people from different socio-economic strata. जन जन को ताकत है देती सारे देश में, मुद्रा योजना ने कारोबार बढ़ाया, जन सुरक्षा ने विश्वास। संस्कृति, संदेश, नए विचारों और कार्यों को लेकर उन्हें प्रदर्शित कर रही हैं झांकियां। और अब सलामी मंच के सामने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की झांकी। प्राकृतिक हो या मानवीय, आपदा के समय ये बल मानवीय सहायता और सेवा में सबसे आगे रहता है। इसी विचार को दर्शाती झांकी जिसमें सहायता और बचाव कार्य देखे जा सकते हैं। चट्टानों से भिड़ जाते हैं, चाहे जैसा भी हो खतरा हम तो जान बचाते हैं, और निराशा में भी हम आशा की ज्योति जगाते हैं, आशा की ज्योति जगाते हैं, सेवा और सुरक्षा का हम विश्वास दिलाते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, हम देश की शान। एनडीआरएफ के बाद जल मिशन से जुड़ी सरकार की नई पहल को दर्शाती जल शक्ति मंत्रालय की झांकी। इस पहल का लक्ष्य सन 2024 तक हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराना है। जल संरक्षण और जल संचयन का संदेश, पानी बचाइए, जल है तो कल है। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है, खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है, सूखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। Glorious past and vibrant future, the theme of the Kolkata Port Trust tableau under the Ministry of Shipping. The gloriously glowing Saga of one drops as they make their way past the saluting base. We now have the tableau from the Ministry of Shipping, glorious past and vibrant future. One of the city's finest engineering marvels, built and maintained for the past 76 years with pride by the fort. The Howrah Bridge is also shown. rich as a sultan, poor as a mite, we are all worth the same when we turn off the light. Kashmir se Kanyakumari, the horticulture tableau of the Central Public Works Department, underlying the And theme this unity is in the queen of all flower arrangements.
The tableau from the Central Public Works Department CPWD, Kashmir se Kanyakumari tak, displays the memorial of Swami Vivekananda surrounded by the sea at the southernmost part of the country, and also the breathtaking landscape of the Kashmir Valley. देश प्रेम और राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक वैभव के रंगों से नहाया हुआ राजपथ साक्षी बन रहा है 71वें गणतंत्र दिवस समारोह का। अब बारी है सजी धजी जीपों पर आ रहे बच्चों की, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से इस वर्ष सम्मानित किया गया है। ये 49 बच्चे जिनकी असाधारण उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन बच्चों को बहादुरी, नवोन्मेष, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और संगीत के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, जिनके नाम आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने उम्र को पीछे छोड़ा है और शरीर की सीमाओं को पीछे छोड़ा है और उत्कृष्ट प्रदर्शन, असाधारण उपलब्धियों की नई मिसाल कायम की है। राजपथ पर रोमांच का समावेश, प्रसन्नता का माहौल इन बच्चों को देखकर। देश के कोने कोने से चुने गए ये नौनिहाल कल के भारत की सुनहरी तस्वीर हैं। 71वां गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ साक्षी बनता हुआ, और अब राजपथ पर अरविंद गुप्ता डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली के 160 छात्र छात्राएं मौजूद हैं। योग विश्व शांति की ओर विषय पर अपनी प्रस्तुति के लिए पूरी तरह से तैयार। योग जो कि विश्व को भारत की अनमोल भेंट है, आज उसका प्रदर्शन अरविंद गुप्ता डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल की छात्र छात्राओं के द्वारा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
यही योग विश्व शांति की ओर। अब आपके सामने The young showcasing so beautifully their creative brilliance and dexterity. And now the Garba dance being presented by the West Zone Cultural Center, Udaipur. Many influences have conceived and shaped Garba, the most popular folk dance of Gujarat, traditionally performed during Navratri in worship of Shakti. As a part of the region's rich repertoire of folk heritage, Garba has been an integral, multivalent component of Gujarati shared heritage for almost a millennium as a literary genre, religious ritual, and folk dance, the Garba dance. The josh of the youth of India has taken over Rajpath, much to the excitement of the youth in the audience. Students from Vinayanagar Bengali Senior Secondary School, Sarojini Nagar, now present Baul music. The singing minstrels of Bengal, who are both Vaishnav Hindu and Sufi Muslims, are singing a composition of Guru Rabindranath Tagore, Bhenge Mor Ghore Chabi, meaning, break my locked door and set me free, O friend. The students from Vinayanagar Bengali Senior Secondary School.
সম্মুখে ওই হেরি পথ তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে সম্মুখে ওই হেরি পথ তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষ হারা বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে लोक संगीत की सरिता राजपथ पर बहती हुई। बाउल के बाद सर्वोदय कन्या विद्यालय बी ब्लॉक जनकपुरी दिल्ली की छात्राएं नृत्य के माध्यम से बता रही हैं कि राजस्थान के सौंदर्य का वर्णन भला शब्दों में कहां हो सकता है। राजस्थान की भूमि के सौंदर्य और विशेषताओं का वर्णन महारा रंगीलो राजस्थान, जयपुर में आमेर भवानी है, जोधपुर में मंडोर सौंदर्य बिखेरता है, कर्णी माता बीकानेर की शान है, आबू हमारा छत्र है तो जैसलमेर हमारा रक्षक। सर्वोदय कन्या विद्यालय बी ब्लॉक जनकपुरी दिल्ली की छात्राएं महारा रंगीलो राजस्थान। पधारो हमारे देश गोरी धोरारी धरती रो बजरंग बाणारी धरती रो वीरा धर्मारी धरती रो थारो साईं साईं करा मैं भगवान कण कण में गूंजे जय जय कोरड़ी कर सोड़ा श्रृंगार के चाली पानी ने पणिया कोरड़ी कर सोड़ा श्रृंगार के चाली पानी ने पणिया चाली पानी ने पणिया रे चाली पानी ने पणिया दसों दिशाओं में गूंजी है वीरारो गुणगान जयपुर में आमेर भवानी जो दानो मंडोर थारी गणना में खोला थारी गणना में खोला में बाता घेर घूमे आबू छतर है तोशी मारो रक्षक जैसलमेर थारी गणना में खोला थारी गणना में खोला में बाता घेर घूमे ओ थारी काई काई करा में बखान रे मारो रंग रंगीलो राजस्थान मारो रंग रंगीलो राजस्थान मारो रंग रंगीलो कितने सारे रंग हैं मेरे भारत में और वो आज
The children concluding their performances now to splendid applause. Youthful dynamism still echoing along Rajpath. Wonderful performances and creative presentations presented with such grace and beauty, and the audiences loved that. The brilliance of India's children, skilled, dedicated, and waiting to forge ahead for a splendid tomorrow. Everyone's now waiting with bated breath for the Daredevils, that's the CRPF motorcycle team, guaranteed to evoke excitement, complete awe, and admiration. And we can spot them already. Leading the Daredevils at today's parade is their dynamic leader, Inspector Seema Nag. And she's going to be saluting the president smartly while standing on top of the moving motorcycle. Here she is. And Head Constable Meena Chaudhary is displaying the ready position to fire 2 9mm pistols in both her hands while balancing herself amazingly on her motorcycle. Just watch the way they make it look all so easy and effortless. Rolling down Rajpath now, 4 daredevils donning different uniforms worn by the force while balancing themselves on one motorcycle, the formation led by Head Constable Katke Lata. रोमांच की पराकाष्ठा, साहस की नई परिभाषा, संतुलन, धैर्य का अनोखा सामंजस्य, ये है मोटरसाइकिल सवार सीआरपीएफ का महिला दल राजपथ पर अपने विभिन्न पोशाकों में संतुलन की मिसाल पेश करते हुए। राइफल पोजीशन इसके ठीक पीछे आप देखेंगे। मोटरसाइकिल पर सवार 4 डेयरडेविल्स, कांस्टेबल सोनिया मोटरसाइकिल का नेतृत्व कर रही हैं, उसे नियंत्रित करते हुए, और 3 डेयरडेविल्स सुख शांति के लिए आश्वस्त करते हुए। करतल ध्वनि से अभिनंदन इस प्रदर्शन का सीआरपीएफ के महिला दल का। सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च, हेड कांस्टेबल प्रतिमा बेहरा की कमान में मोटरसाइकिल्स पर सीआरपीएफ की 7 महिला डेयरडेविल्स फ्लैग मार्च का प्रदर्शन कर रही हैं। ऑलराउंड डिफेंस, सहायक उप निरीक्षक सुजोता गोस्वामी के नेतृत्व में 5 डेयरडेविल्स हैं ये, मोटरसाइकिल्स पर ऑलराउंड डिफेंस फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते हुए। 4 डेयरडेविल्स चारों दिशाओं में निशाना लगाते हुए, जबकि 5वीं डेयरडेविल्स अपनी दूरबीन से आसपास का जायजा लेते हुए। And this is a very difficult beam roll being performed by Head Constable Asha Kumari. You need to be perfectly balanced with perfect practice to get this right. Much enjoyment here, much cheering on Rajpath. And here we see perfect balance on Rajpath. Head Constable Sangeeta Kumari is climbing up and down a ladder. Perfect balance with perfect felicity. They make it look all so easy. And following Sangeeta Kumari is the human pyramid, riding majestically in front of the saluting days is the amazing display of daring. Pushing the limits of machine and human endurance are 21 women daredevils on 5 motorcycles making a human pyramid. Assistant Sub-Inspector Anita Kumari VV leads the formation. And the national tricolour proudly unfurled as the Desh Ke Rakshak move gently past. So we now move from diligently practiced gravity-defying moves on the ground to exciting gravity-defying maneuvers in the air. And if you've loved every minute of what you've witnessed so far, then do ask for more. फ्लाइट पास का कंट्रोल अभी आपने देखा,
कर्नल पीपी विश्वास के नेतृत्व में 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, जो भारतीय वायुसेना के अद्भुत और अद्वितीय फ्लाई पास्ट के कंट्रोल के लिए संचार प्रदान कर रही है। So everybody, eyes skywards as we watch the first formation from the fly past, the Trishul. 3 ALH helicopters in Vic formation. For the first time, a tri-services formation is taking part in the Republic Day. Flying at a speed of 180 kilometers per hour, led by Group Captain Abhishek Shukla, Commanding Officer 116 Helicopter Unit. The captain of the helicopter, the captain, is Lieutenant Colonel Atul Srivastav. The Navy helicopter was flown by Commander Ajay Yadav and the indigenously produced in India. और त्रिशूल के बाद आकाश में 3 चिनूक हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में। पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर्स गणतंत्र दिवस परेड में। ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत की कमान में, उनके साथ बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर राहुल शर्मा और विंग कमांडर प्रशांत उनियाल। 180 किलोमीटर की रफ्तार और 100 मीटर की ऊंचाई पर। Is Group Captain Siddharth Rawat, commanding of the 126 helicopter flight. The other formation members are Wing Commander Rahul Sharma and Wing Commander Prashant. The excitement building up in the crowd as the fly past is well on its way. The next formation will be comprising 5 state-of-the-art precision attack Apache helicopters. They have provided the Indian Armed Forces a significant edge against the enemy in the battlefield. The formation will be led by Group Captain Mannat Shailu, Commanding Officer 125 Helicopter Squadron. The captains of the other 4 helicopters are Group Captain Ashok Kumar, Wing Commander Kshitij Awasthi, Wing Commander Indumeet Singh and Wing Commander Praveen Sarathi. Versatile helicopter capable of firing air-to-air and air-to-ground missiles. Spread my wings and I will always fly high. I'll do what it takes till I touch the sky. अपाचे हेलीकॉप्टर्स जिन्हें हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है, और अब डॉनियर फॉर्मेशन विंग कमांडर S.K. चौहान के नेतृत्व में 3 डॉनियर विमान विग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। ये मालवाहक जहाज हैं और अन्य 2 विमानों में होंगे स्क्वाड्रन लीडर विकास कुमार और स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक वशिष्ठ। सबकी निगाहें एक बार फिर राष्ट्रपति भवन की ओर आकाश में। Excitement galore at the Republic Day parade right now. There is speed, there is pulse racing daring, and there is precision, all thanks to these daredevil men in blue. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be an extension of them as they take wing and vanish into the blue. Behind the Dornier, we will soon see the Hercules formation comprising 3 C-130J Super Hercules aircraft in Vic formation. Inducted into the Indian Air Force in 2011, the Super Hercules is a very versatile tactical transport aircraft optimized for special operations. It has gained fame for its high-altitude operations. Led by Group Captain V.P. Singh, the formation will be flying 300 meters above ground at a speed of 350 kilometers per hour. The other 2 aircraft will be captained by Wing Commander Shishir Sukant and Wing Commander H.P.S. Bhati. Behind the Hercules formation is Netra, the eye of the star. Coming all the way. बेहद रोमांच यहाँ दर्शकों में अपने स्थान पर खड़े होकर इस फ्लाई पास्ट का आनंद लेते हुए, और हरक्यूलिस के बाद नेत्र फॉर्मेशन। हरक्यूलिस फॉर्मेशन अभी आपने देखी थी, और अब नेत्र यानी आकाश में नेत्र।
ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने स्वदेश में ही निर्मित किया है। ये रेडार सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी से ही शत्रु के विमान का पता लगाकर उसे नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ सुखोई 30 MKI विमान उड़ते हुए AEW&C विमान ग्रुप कैप्टन प्रदीप बत्रा उड़ा रहे हैं और सुखोई 30 MKI विमानों में विंग कमांडर GBS चौहान और विंग कमांडर उत्कर्ष सिंह। A lovely clear day for a perfect fly past. And now we look skywards for the Globe formation, comprising 3 C-17 Globemaster flying in displaced trail WIC formation at a speed of 500 kilometers per hour. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic aircraft inducted into the Indian Air Force in 2014. The induction of the C-17 aircraft has changed the dynamics of strategic mobility and reach of the Indian Air Force. Be it humanitarian operations or rapid mobilization for civil aid, the C-17 aircraft has always been there at the forefront. The C-17 aircraft being captained by Group Captain P. Sisodia, Group Captain Rakesh Sharma and Wing Commander Karan Kapoor. ये सभी विमान देश के अलग अलग शहरों, वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस से उड़कर यहां पहुंचे हैं। कमाल का कोऑर्डिनेशन। और अब 5 जैगवार विमान तीर की शक्ल में यानी एरोहेड फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे ग्रुप कैप्टन पारिजात सौरभ की कमान में। अन्य विमानों में होंगे विंग कमांडर अर्जारिया, विंग कमांडर गौतम, स्क्वाड्रन लीडर गिल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट चंदेल। इन जैगवार विमानों की रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटे की। Over the years, the fly past has grown to become one of the major highlights of the parade, a wondrous high to conclude a spectacular show of military strength and cultural diversity. And now we look forward to the Fulcrum Arrowhead formation following the Jaguars 5 MiG-29 upgrade air superiority fighters in Arrowhead formation. The MiG-29 UPG aircraft will be flying in formation have been recently upgraded. Led by Group Captain Alok Sharma. The other members of the formation, Wing Commander Parijat Jha, Wing Commander A.B. Vasane, Wing Commander Amol Kelkar and Squadron Leader Arun Balasubramaniam. रफ्तार बढ़ती हुई, रोमांच बढ़ता हुआ और अब 3 सुखोई 30 MKI त्रिशूल फॉर्मेशन में सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। आकाश में त्रिशूल कैसे बनता है ये अब हम सब देखेंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन निशित ओहरी ने। बाकी 2 विमानों में विंग कमांडर नीलेश दीक्षित और विंग कमांडर करण डोगरा। Absolutely spectacular. And now peeling off in 3 different directions. The Trishul formation in the sky. And now a befitting salute to the motto of the Indian Air Force. Nabhasparsham Deeptam, the brilliance that rose to the sky. We will see a lone Sukhoi 30 MKI flying at a speed of 900 kilometers per hour that will split the sky with a vertical Charlie. In this aerobatic maneuver, the aircraft does a high-speed run at a low level and then pulls up into a vertical climb and then performs quick rolls to one side. Wing Commander Yatharth Johri along with Flight Lieutenant S. Mishra.
ये हैरत अंगेज कर देने वाले दृश्य हैं। Breath holding, breath stopping, breath giving. And so, after enthralling everyone here, as these magnificent men and their flying machines head towards their landing base, our hearts also land back to ground earth. What a splendid display it's been today. From the solar power of a soldier to the combined and many times over multiple power of man in sync with machine. Inspirational, rewarding, and definitely applaudatory. Yes, what a stupendous and magnificent flypast by the Indian Air Force. Our air warriors leaving an indelible impact far and wide across the skies over Rajpath, and that too with such panache. The skies their canvas for showcasing the most unbelievable and daring maneuvers in the flypast. Smiles all around. This has been a successful parade as always. India's military might was showcased along with her rich and vibrant cultural traditions, much enjoyed by the spectators. वायु विचरण करते उन्नत विमान राजपथ पर गरजते अस्त्र शस्त्र और साथ ही सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय। राजपथ पर 71वां गणतंत्र दिवस यकीनन सही अर्थों में अपने उन्नत की ओर अग्रसर है। अपने समापन से पहले सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का परिचय दिया भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं ने, जिसको देखकर यकीनन दांतों तले अंगुली दबा ली सभी ने आज यहां राजपथ पर। The President's bodyguard now returning to Rajpath to escort President Ramnath Kovind and His Excellency Mr. Jair Bolsonaro back to Rashtrapati Bhavan. Our gratitude to our chief guest for his gracious presence here today. On behalf of the people of India, we wish him and the people of Brazil prosperity, goodwill, and a bright and shining future. The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Anup Tiwari, the Second in Command, Lieutenant Colonel Shardul Sabiti. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem of India. राष्ट्रपति अग्रक्षक सलामी देगा राष्ट्र सल्यूट मध्य तक। Balloons in the colours of our flag, painting the skies with the pride of India. The heart swells with pride when we see them flutter gently in the breeze. The national tricolour is a symbol of who we are as a people. Proud, valiant, patriotic. The colours live in harmony as we do. भारतीय तिरंगे के रंग में रंगे ये हजारों गुब्बारे गणतंत्र दिवस के राजपथ के ऊपर के आसमान को
एक नई आभा प्रदान कर रहे हैं, एक नया सौंदर्य दे रहे हैं और राष्ट्रीय एकता को नई परिभाषा दे रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, साथ में आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम जायर मेसियस बोल्सोनारो अब प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। ब्राजील पहला लैटिन अमेरिकी देश है जिससे वर्ष 1948 में भारत के कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में ब्राजील भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार है और उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि महामहिम जायर मेसियस बोल्सोनारो की इस भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, उनमें और मजबूती आएगी। President Bolsonaro's visit will indeed spur strategic bilateral ties. Several bilateral meetings are on the anvil during this visit. राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ब्राजील के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सेना के तीनों प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से अभिवादन स्वीकार करते हुए विदा ले रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने से राष्ट्रपति महोदय का काफिला कुछ ही समय के पश्चात राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू साथ में उपस्थित। President Ramnath Kovind and the chief guest at this year's Republic Day celebrations, His Excellency, the President of Brazil, Mr. Jair Bolsonaro, now leaving Rajpath in a ceremonial escort provided by the President's bodyguard as they return now to Rashtrapati Bhavan. All the brilliance of the sights and entire spectacle of our Republic Day celebrations echoes in our hearts and minds. To each participant, the gratitude of an eternally grateful nation. Each of us proud of our youth, our armed and paramilitary forces, our superbly talented young children who completely overwhelmed us all, and the creativity from all corners of India showcased this morning. The Indian Armed Forces invoke the deepest sense of pride and gratitude in the heart of every Indian, always alert and responsive to varied situations, discharging their duties in keeping with the highest traditions of skill, excellence, fearlessness, professionalism, and an undying and unwavering loyalty to their motherland. Let's rededicate ourselves to all these ideals on this Republic Day. The spectators here enthralled by the spectacular Republic Day parade, but somewhere maybe wanting for more, if only the spectacle had been a little longer. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, देश की चौतरफा प्रगति, उसमें जन जन की भागीदारी, यही होना चाहिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी का संकल्प, और यही है संदेश इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व का। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और श्रीमती उषा नायडू प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल, आज जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ और सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन देखने को मिला।
So though the parade concludes at Rajpath in the capital today, the celebrations do not end. We as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and a unity that bridges differences and challenges divisive forces. We earlier saw hundreds of balloons in the colors of our national flag being released. They were symbolic of the freedom of spirit, of the rising aspirations of a youthful nation, serving as a reminder that we all need to move ahead together with the other, riding the winds of change for growth and progress to be truly meaningful as a nation. Prime Minister Narendra Modi, now ready to leave. राजपथ से एक एक करके गणमान्य व्यक्तियों का प्रस्थान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हर गणतंत्र दिवस पर दर्शकों में बड़ा उत्साह होता है जब इस कार्यक्रम के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री खुद इन दीर्घाओं के निकट आते हैं और जबरदस्त उत्साह यहाँ दर्शकों में प्रधानमंत्री को अपने निकट पाकर In fact, as Prime Minister Narendra Modi invariably prepares to depart from one of the national celebrations, there is invariably a requirement, a call, a cheer that comes out asking him to go and mingle with the people. No other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And no other land in the world harbors so much of enthusiasm. दर्शकों में बहुत उत्साह और उत्सुकता रहती है इस बात को लेकर कि क्या कार्यक्रम के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री उनके इनक्लोजर की तरफ, दीर्घा की तरफ आएंगे और प्रधानमंत्री भी उन्हें निराश नहीं करते. Absolutely. In fact, the multi-hued kaleidoscope of cultures that we have evolved into completely on view here and visible at Rajpath. Prime Minister Mr. Narendra Modi, now in the midst of his countrymen who he loves so dearly. He has a special place in his heart for the children and youth of the country, and he's been trying to meet with many here today on Rajpath, even though it's from a distance. The crowds are ecstatic and loving his connect with the people. जबरदस्त दृश्य जहां दर्शकों के हाथ में, एक हाथ में कैमरा और दूसरा हाथ अभिवादन कर रहा है, हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का. और प्रधानमंत्री श्री मोदी राजपथ के दोनों ओर जो दीर्घाएं बनी हैं, बारी बारी से लोगों तक पहुंचते हुए लोगों का उत्साह और भी बढ़ता हुआ. That's right, crisscrossing Rajpath, Sanjeev. That's what he's doing. I think there's a requirement from either side that he should come to that side. So changing sides periodically. और लोग जब उन्हें इशारा भी कर रहे थे तो उन्होंने धीरे से कहा भी इशारे में कि धैर्य रखिए, मैं उधर आऊंगा आपकी तरफ. And I think he's going to be taking a long walk down Rajpath. And now he's in the central part of the vista, right in the middle of the road. His cavalcade following him very closely. Yes, and he continues to walk. And the children are absolutely loving it. A special and delightful moment for all of them. I don't think it's very often that you can see your leader at such close quarters and in such wonderful surroundings. उन सभी दर्शकों ने जिन्होंने सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा है, ये एक संदेश है प्रधानमंत्री का कि अब थोड़ा चलना भी चाहिए. फिट इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें. In fact, days like today only offer possibilities to step out of our routine and touch this wondrous fusion of mind, heart, and spirit that India is.
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आम जनता से लगाव निश्चित तौर पर परिलक्षित हो रहा है इस 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के चरमोत्कर्ष पर। और जो आम जनता, अपार जन समूह यहाँ राजपथ के दोनों ओर उपस्थित है, अपने आप को निश्चित तौर पर गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने इतने करीब पाकर। In fact, India is a young country with an old soul, and young India today is aspirational, aware, alive, and demanding, and asks for what it wants and its dreams and ambitions. They asked, and the Prime Minister walked. जब मन में हो इरादे कुछ करने के, तो रास्ते भला कब आसान होते हैं। अक्सर लंबे सफर के बारे में सोचकर ही लोग थक जाते हैं। रास्ते भला कब आसान होते हैं, लेकिन कुछ उन रास्तों पर चलते जरूर हैं जिनसे और बचते हैं। सबके लिए उम्मीद आए कैसे, एक बेहतर कल लाएं कैसे, सवाल है। सवाल का हल ढूंढते हैं, कुछ समय की आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं। The Prime Minister continues walking, also challenging the reach of our cameras. We're of course bringing you live images as far as the camera's eye can see. A lovely light breeze seems to have picked up. And a happy closure to our Republic Day Parade celebrations here at Rajpath, New Delhi. राजपथ पर दूर जहां तक नजर जाती है, माननीय प्रधानमंत्री का काफिला अब कुछ ही देर में वो यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। राजपथ पर निखरी अनोखी छटा और बिखरे रंग गणतंत्र उत्सव को और भव्यता प्रदान करते हुए। देश की मिट्टी मस्तक का चंदन है, इसकी नदियों के जल में आस्था है, जीवन है। भारत भूमि को कोटि कोटि नमन है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद। कोटि
बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सभी